Thank you, Charlene, and thank you to India Art Fair for inviting me to have a conversation with these wonderful artists here. And when I say conversation, that's exactly what we are going to have. और मैं बीच बीच में हिंदी बोलने की भी कोशिश करूँगी। हम बात इसलिए करेंगे ताकि ये जो 3 practices हैं, these very young practices, very interesting practices. What I found when I was looking through their portfolios is that they have certain adjacencies, similarities of thought, but which lead to very different processes and different ways of approaching their practice. And we've all had some butterflies in our stomach, which hopefully has been averted by a little conversation that we had. So, what Charlene just said, and when I look through these practices, is that there is these areas that are important for all 3. And these are materiality and mediums. There's a deep affinity to nature and ecology. All 3 of them, in their own ways, look at memory and personal histories. And for them, their art is a way of resistance and protest. And all of them, again in their own way, are looking at speculative futures and perhaps talking through their work about what possibilities there is about healing, right? Could we see their videos to set the stage, and then there's a small little videos that have been made on their practice, and then we will look at their works which will run in a loop, following which I will have the conversation. Okay, so shall I just set the stage? Okay. While the technicalities are being worked out, आप तीनों ने अभी इंडिया आर्ट फेयर आर्टिस्ट इन रेसिडेंसी किया है, and the subject matter is coming home, which is such a beautiful thing. And coming home, या घर आना, या to come home to the idea of home. What does it mean to each one of you? If you could very briefly tell us that. So for me, when Shalini and you first shared that the title of the talk would be Coming Home, it was very personal for me, because it's always like when you stay in abroad, you feel more cleansed and you start missing home more. So home starts to build in everywhere, places where you find known and unknown people. So for me, my home there was only the people that I didn't knew. My studio was my home there, but I miss my people here. So when the first title came out, it was very personal, but it also for me was like returning to the place and the land that I was part of. Yeah. So Imon is actually working out of the UK at the moment. So for her, the idea of home, of course, was literally, in a sense, returning back. Lee, what about you? I just thought about the silver lining between 3 of our works. It's so different, but the silver lining being this idea of home is quite fascinating. So I'm excited to explore that more with you guys today. कमिंग होम मेरे लिए खास करके जैसे हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तो फाउंडेशन के बाद हमने सोचा आगे क्या हम करें। तो खास करके सबसे पहले हम अपने होम और फैमिली को ही देखते थे, क्या चीजें हमारे यहाँ चल रही है। खासकर मैं
एग्रेरियन बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने गांव के लोगों का और घर के लोगों का कंडीशन देख रहा था कि किस तरीके की मतलब खास करके परेशानियां हैं मतलब जो उनके जीवन में, उसको मैं मतलब अपने काम में लाने का मतलब सबसे पहले मेरे दिमाग में वही आया कि हमारे घर में क्या चीजें चल रही हैं, किस तरीके से लोग फार्मिंग छोड़ रहे हैं, टूल्स वगैरह अबंडेंट हो रही है। तो इसको तरफ मैं जाना शुरू किया और उसी टाइम से मैं ऑब्जेक्ट वगैरह देखने लगा। मुझे वो स्टिल लाइफ करना मतलब उतना मजा नहीं आया जितना मतलब मैं घर की चीजों को देखना पसंद करता था। Charlene, if we can't play the videos, it's fine. I mean, we can just go on to the slides. Okay. आप तीनों का काम जो आपने यहाँ पे आर्ट फेयर में रेसिडेंसी में किया है, if all of you have not yet seen the works, please do. Umesh's work is a beautiful installation as you go up to the food community space. Lee has this amazing installation where you can relax and sit outside the auditorium space, and Imon's work is right outside this hall. So can you all, each one of you walk us a little through the works that you have done here? The title of my work, the entire series, is Forest Where I Return, and it's pretty much very about me as where I come from, that is Assam. And as we all know, Northeast is famous for its natural beauty. And I'm always fascinated by the nature, the wildlife, and almost everything related to ecology. And I feel when I stayed in Baroda, I used to get fascinated whenever we used to have Navratri. The clothes, the patterns in the Garba was everything about ecology. We have fish pattern, we have animals, ambo, and different sorts of patterns. So for me, working for this series of work was about exploring the textiles and exploring the discarded materials which I found in London. A lot of them was found in the charity shops in London, and some I collected from the textile workshop in RCA in Kensington. So it was very fascinating for me how Indian textile is so much known even outside places like London, and even my tutors used to wear the textiles, the prints are of Indian origin. So for me it was like home. As I saw the textile, I felt like it's something that I have to use. And this entire series is titled on Wild Child, Wild Thoughts, and you say I complete body as a songwriter. So for me, I came from a place which is full of natural life, vegetation, forest. So I was like a Mowgli in that area. I grew up with a lot of natural life. And when I moved out from Assam, people, they know about Assam as a forest. They don't exactly know about our culture and other than just the ecosystem. So for me, I wanted to be the wild child and the wild thoughts, and I didn't scrap off that part of me that is with Assam. Yeah. Yeah, it's interesting when you say wild child and wild thoughts, because when I looked at the words and read your statements, it also connected me to the idea of wilderness, of nature, of forest and vegetation, that kind of a wild growth that comes up in your work. It seems that you've cut these pieces together and created a wilderness that your work you get lost into. And coming from there to perhaps, what Umesh did yesterday, to explore the performativity of the wildness of nature, of land, and how your body becomes land. Could you talk a little about that, Umesh?
जिस तरीके से मतलब मैंने अपने बचपन का जो लाइफ जिया है, हम लोग जिस तरीके से ब्रांचेज तोड़ के लाते थे या फिर दिन दिन भर वो लकड़ियां ढूंढते थे ताकि वो जलावन हो सके, या फिर लकड़ियों के वो ऐसे काटते थे ताकि हम बेल उस पे चढ़ा सके। तो मेरे परफॉर्मेंस में भी बहुत सारी चीजें वो थी। मतलब हम खास करके जो मेरा परफॉर्मेंस था, मैं अपने शरीर को एक लैंड की तरह ट्रीट कर रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि, या फिर लगता है कि मतलब जो हम देख रहे हैं कि जो लैंड है, उसका खरीदने का किसी के पास कोई सीमा नहीं है। कोई भी कितना भी लैंड खरीद सकता है, और बहुत से लोगों के पास बिल्कुल ही लैंड नहीं है। तो एक तरह से मेरा ये सटारिकल परफॉर्मेंस था कि मैं बॉडी ही मेरा लैंड है और मैं इसको लिप रहा हूँ, मतलब डबिंग माई लैंड। तो अपने बॉडी को मैं लिप रहा हूँ, उसमें सीड डाल रहा हूँ और उसको मतलब दिखाना चाह रहा हूं मैं कि किस तरीके से मतलब हमारा बॉडी इन सब चीजों के साथ, मतलब जो मटेरियल है, मतलब मेरे काम में खास करके हम मटेरियल से बहुत कुछ बताना चाहते हैं कि हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। आप कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बोले थे अभी जब हम बात कर रहे थे कि आप अपने शरीर के ऊपर जब मिट्टी लेप रही हैं तो आप उसको कुछ अलग नजरिए से देख रहे हैं। आपका शरीर तब एक जमीन का हिस्सा बन जा रहा है। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मतलब शरीर, एक बार फिर शरीर जो जमीन का हिस्सा बन जा रहा है, मतलब शरीर जो है जमीन का एक पार्ट है और मतलब हम उसको एक जमीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मतलब खास करके मतलब इंडिविजुअल, मतलब हम उसके लिए बात कर रहे हैं जिसके पास की बिल्कुल लैंड नहीं है। तो मतलब हम अपने ही गांव में देखते हैं कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास की जो दिन भर पेड़ पे चढ़ते हैं और आम तोड़ते हैं, जामुन तोड़ते हैं, लेकिन उनके पास अपना एक भी पेड़ नहीं है। तो उस तरह की मतलब चीजों को लेकर मैं, ये परफॉर्मेंस था मेरा। खास करके जिस तरीके से मतलब इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है हमारे गांव में ही, मैं अपने गांव को ज्यादा वो करता हूँ, तो उसको लेकर मैंने ये परफॉर्म किया था। Lee, coming to you, in your works, you have treated the idea of land and ecology in a very, very fascinating way. When we had our conversation and when I read your statements, I realized that you are very much, influenced by the idea of science fiction, especially Octavia Butler's, and you explore the idea of ecology through solar, punk. And how do you look at landscape as coming into your being? Could you walk us through that, please? Yeah, I think it comes back to this idea of coming home or home and belonging. As a displaced or transient person, finding geographies that I belong to or tethering myself to a land has always been very difficult. So that's something that I've been exploring and trying to find this new connection with a place, a land, a geography, because my roots have always been so severed. And as I explore that, the work that I've created here is called Transmutations. It's a space that you can crawl inside of and rest in. So over the last few months, over the last year, I've been thinking so much about creating these spaces for people to be able to feel like they belong there. No one's policing the space as much, and there's a moment where your body can lay and be. Yeah. I really was fascinated by what you said as hopeful, futuristic ecologies, and how you look at the futures as a soft future. Could you enlarge upon that through the idea of not only your sculptures, but also the idea of how you situate them within a larger landscape, whether it is here, where you are inviting a collaborative experiencing of that, or whether when you did some works in Hampi where it becomes part of the landscape, the stones itself? I think the reason I'm so interested in science fiction and thinking a little bit more optimistically about ecology is because it's very easy to lose hope
right now with everything. And it's through storytelling that we can start to imagine a different reality or a different potential place for the future to go, or time to take us together. So I'm hoping that through creating works that are moment of pause, but also moment of pondering, something more colorful and bright rather than what we've always been fed as these dystopian narratives, we can together start to imagine something that might be a little bit more joyful for all bodies and all people. Yeah. I think when I looked at all three of your works, there was another affinity which I found very fascinating. You have written your own manifesto, Lee, and Imon is very, very influenced by poetry. And while Umesh, आप अपनी कविता खुद लिखते हैं भोजपुरी में, आप ये जो कविता के थ्रू अपने काम को कैसे देखते हैं और क्या लिखते हैं? अगर आप हम 2 लाइंस आपकी भोजपुरी कविता के हमें बताएं और उसमें से हमें समझ आए कि आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं। जो अभी मेरा काम डिस्प्ले है यहाँ पे आर्ट फेयर में, उसमें मैंने एक पोएट्री को कार्व किया है, जिसमें कि मैं 1-2 लाइन उसमें सुनाना चाह रहा हूँ कि जैसे कब तक घसिया बिया बचाई सौंसे दुनिया मारे दवाई। मतलब जो घास है कब तक अपना सीड खुद से बचाएगा। जिस तरीके से हम देखते हैं कि पार्टिकुलर घास के लिए एक दवा बनी हुई है, एक पेस्टिसाइड बने हुए हैं कि इस घास को मारने के लिए ये दवा है, जो कि फिर भी वो घास उगता है, फलता है, फूलता है और वो फिर से अपना सीड देता है और वो सरवाइव कर जाता है। तो किस तरीके से मतलब ये चीजें मतलब मैटर कर रही हैं। खास करके मैं अपने बचपन की चीजों को याद करता हूँ कि जो घास हमारे गांव में बचपन में उगती थी, अभी वो घास दिखाई नहीं देते हैं। वो घास बिल्कुल खत्म हो गए हैं, बहुत कम, मतलब कहीं कहीं इक्का दुक्का दिख जाता है, जिसका कि पूरा मतलब पहले दिखता था। तो इन चीजों को लेकर मैंने ये पोएट्री लिखा। आगे के लाइन में भी मैंने इसमें हैंड पंप जो चापाकल है उसका जिक्र किया, किस तरीके से चापाकल है जो हमारे गांव में जो चापाकल है उसका लेयर पिछले 5 सालों से चला जा रहा है और चापाकल सबसे गरीब तबके के लोगों के पास चापाकल होता है। और हम देख सकते हैं कि जैसे दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, हम लोग दूसरे ग्रहों पे भी पानी ढूंढ रहे हैं, चंद्रमा पे पानी ढूंढ रहे हैं और ग्रहों पे भी लोग पानी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव के चापाकल सूख रहे हैं, हमारी नदियां सूख रही हैं, वो इतनी गंदी हो चुकी हैं, उनमें मतलब जिस तरीके के मटेरियल हम डाल रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर मैं ये कविता को लिखा हूँ। और हम कविता तो ऐसे सुना सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा कार्व करके दिखाना चाह रहे हैं कि आप इसको देखें और इस चीज को समझें, इसलिए मैंने थोड़ा बोल्डली उसको कार्व किया है और बहुत ही ब्रूटल कार्व है। बस आप देखेंगे कि जिस तरीके से मैंने वुड चूज किया है और उसको कार्व किया है, वो उस तरह से दिखाने की कोशिश किया है कि आप एक बार इसको जरूर देखें। मतलब हम थैंक यू। Imon, your current work, you say, is an incomplete body as a songwriter. I mean, Yes. again, connecting to this idea of poetry about song and how a lot of your practice is also rooted in that. I remember also reading that you were very fascinated by the song from the Assamese Yes. movie Aranya. So how does this poetic, root take form in your works? I think poets and songs, it helps me to be more empathetic towards life and nature. And as I said, everything in the universe is connected to something or the other. And most of the times when I feel myself lost, I read a poem by Rumi or Alexander Pope or Stevie Smith, and there are many other that I also tried writing poems, though I'm not good at the language. So I try to read more and feel it through my works. So poems really help me to navigate in my broken self. That is what my work is about. And
it sort of emerged in a form of lot of layers and lot of self-search that happened in the work itself. So poem for me, and also song Aranya, where it's a song about Hile Hile Thaika Khali, which is about how the river flows and then how it sort of navigate and meander through the stones. So I feel more connected as into the river and the life that we lead, which is full of obstacles and is never smooth. So that's how it helps me also produce works. In your case, Lee, again, I think what I found very interesting was how you approach, the identity and fluidity through queer histories, and what craft, the role it has played in how you approach this kind of building of worlds in your works. So how does history and how does especially queer histories and affect you, and what do you take from those spaces and bring to your work? Such a good one. I think, as going back to this transient being feeling that I'm always trying to find this tether in the world, I think about building my own queer ancestry or lineage, or trying to find these moments of artists that I look up to, or moments in history that have influenced protest or art making in so many different ways. And I think what's so beautiful that's happening right now is this resurgence in fiber art, fiber art has always been a point of activism and protest, and it's played such a huge part in how we build our identities as queer people, whether it's the daily use objects or the objects that shape who we are. There is this beautiful intertwined history that happens within activism and queerness, and that's where this idea of the Stitch Punk Manifesto came about. It is me trying to understand and study and pull out these moments of craft and survival as they come together. So I continue to research and study because I'm actually a student, yeah. So this idea of stitching is very important to you because, of course, metaphorically also it stitches things together. I also found that affinity in Imon's work, where Imon is fragmenting, things, deconstructing them, but also stitching them back. You do talk about, the use of stitches almost in a way you have used paint earlier. And Umesh, आपके काम में भी एक thread बनाना जो आप बोल रहे थे आपने अपनी दादी से सीखा. These very interesting point of departures in your works. So Imon, if you could tell us a little more about how you approach this fragmentation, but also stitching things together, and how it is part of what you call your identity, forming space. I used to do a lot of painting when I was in my bachelor's in Baroda, and I used to see a lot of failures while painting, and I didn't like all the paintings that I produce. So I tend to either scrap them off or I keep them in my studio. So the sort of idea it came is how I can reuse my old paintings in ways that it re-emerges in the ideas that otherwise tends to overlap. And that's how I started to work with textiles. I first saw this fascination of me towards scrapped fabrics is when I was in Baroda with my friend, and I saw a heap of textile in one of the tailor shops in Fatehganj. And I was so attached to that bunch of textile, I felt like it's almost a part of me lying there.
And when I asked the tailor if he can give that bunch of textile for free, he is like, I cannot. So that time I felt like how scrapped and how wasted things are also of lot valued. That's how we are, I think, in terms of who we are when we try to find ourselves over and over again. And that sort of idea started to came in my works when I was in RCA. So when I was in RCA, I was surrounded by the white community. And for me, I felt the only way I can express myself was through exploring the colors and textures of my skin in the form of the textile and the surface that I create in my works. So in that manner, I think I started to re-stitch the fragmented textiles and fragmented pieces of my old works in my new body of works. When we were having a conversation in the lounge, we discussed something very interesting, which was that in Imon's work and Lee's work, they use a lot of what is the discarded material, what is waste. They look for material that perhaps left in the landscape or would find its way into landfills. But they take that and they create the works out of these kind of discarded materials. And उमेश ठीक उल्टा करते हैं. उमेश ने अपना काम शुरू किया क्योंकि आप प्रिंट मेकिंग के टाइम पर आपको लगा कि जो आप मटेरियल यूज करते हैं वो इकोलॉजिकली खराब है. जैसे आप एसिड देखें कि लोग एसिड फेंकते हैं, या आपके घर में आप बोले गर्म पानी तक आपके घर में नाली में नहीं फेंका जाता है क्योंकि कीटाणु या चींटी उससे मर जाएंगे. तो आप एक डीप रूटेड इकोलॉजिकल आइडिया से आपने प्रिंट मेकिंग को छोड़ा और अभी जो आप काम करते हैं. तो ये आप Imon and Lee, if you could discuss a little bit about why you use waste material. आप अगर इसके उसमें बोले कि आप कैसे एक दूसरे पर्सपेक्टिव से वही काम कर रहे हैं, पर जैसे मैंने जो बोला कि मतलब हमारे घरों में जैसे गर्म पानी भी नाली में नहीं डालते हैं क्योंकि कीड़े मर जाएंगे. तो हम देख रहे हैं हम सीधे एसिड नाली में डाल रहे हैं जब हम प्रिंट मेकिंग कर रहे हैं. तो एसिड के मतलब कुछ मीडियम्स में लिथोग्राफ करता हूँ, वो भी हालांकि बहुत सच वो नहीं है, लेकिन थोड़ा एसिड से तो सही है काफी. लेकिन मैं कोशिश करता हूँ एसिड काफी ज्यादा, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन में आप देख सकते हैं प्रॉपर लैब नहीं है और उसके लिए अलग ड्रेनेज नहीं है. वो ड्रेनेज पूरा उसी जगह जा रहा है जहाँ सारे पानियां जा रही है, सब जगह सारे पानी जहाँ पे जा रहा है. तो इस चीज को लेके मैं थोड़ा वो हूँ. और जिस तरीके से बच्चे और भी जो सीखने जाते हैं वो एसिड को यूज करते हैं बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के, और कुछ चीजें यूज मतलब नहीं रहते, डायरेक्ट हाथ एसिड में डाल देते हैं, एसिड वाले पानी में. तो एसिड या उसके साथ और भी जो चीजें यूज होती है, विटामिन हो जाता है, तो बहुत सारे कैंसरस मटेरियल है जिसको कि लोग यूज करते हैं. और खास करके मैं अपने काम में मुझे थोड़ा ऐसा लगता है मैं बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता हूँ अपने काम करने के लिए. मैं भी इस चीज को करता हूँ. मैं खास करके आप देखेंगे मैं पुआल से बहुत सारी चीजें बनाता हूँ. पुआल मुझे खरीदना नहीं पड़ता है. मैं लकड़ी भी वैसा खरीदता हूँ जो कि केजी के भाव से मिले, जो फर्नीचर के लिए नहीं, जो कि वेस्ट जलाने और उसके लिए रखा गया है, उस तरह की लकड़ियां खरीद के काम करता हूँ. या फिर मैं कबाड़ी जाता हूँ, वहां से जो टूल्स लोग कबाड़ी में सेल कर देते हैं. बहुत सारे किसान जो कि पुरानी टूल्स हैं जिसको कि यूज नहीं करते हैं और वो कबाड़ी में सेल करते हैं. तो गांव तरफ की जो कबाड़ी है वहां पे किसान से संबंधित चीजें मिलेंगी, लेकिन हम शहर की कबाड़ी में ढूंढेंगे तो बिल्कुल वो फार्मिंग टूल्स तो मिलेगा ही नहीं. तो उस तरह की चीजों को हम अपने काम में कलेक्ट करते हैं. जैसे और जो लोग छोड़ दिए हैं अबंडेंट चीजें हैं, जैसे कि टूल्स ही हुआ, और मतलब टूल्स जिस तरीके से लोग नए जो तेज चलने वाले क्या बोलते हैं, जैसे ग्राइंडर हुआ, कटर हुआ, बड़े बड़े मशीनों की ओर भाग रहे हैं, इसलिए कि हम काम को आसान कर पाए. लोग मतलब इसलिए करते हैं ना कि ताकि हम जल्दी से कर पाए, लेकिन हम छोटे टूल्स को छोड़ रहे हैं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे टूल्स हैं वो एक अभी के टाइम के लिए उनसे काम करना मेडिटेशन जैसा हो गया है.
हम लाइफ को आसान तो बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारा बड़े टूल्स हमको प्रॉब्लम भी दे रहे हैं। जल्दी तो काम हो जा रहा है, लेकिन हम उससे फिर देखिए बहुत सारी बीमारियां लेके आ रहे हैं और हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं वो दिक्कत पहुंचा रहे हैं। तो हमें इसी के साथ अगर आप अपना जो एक मेजर कंसर्न है आपके काम में, एंसेस्ट्रल नॉलेज, जो आप टूल्स की बात कर रहे थे और आप बोल रहे हैं कि आजकल वो टूल्स यूज नहीं होते हैं, यहाँ पे भी हमने आपके कुछ काम में देखा है और पहले भी आपने ये जो फार्मिंग टूल्स है, आप अपने गांव जाके देख रहे हैं आजकल कोई फार्मिंग नहीं कर रहा है, वो टूल्स अभी और ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आपका जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो आपके पुश्तैनी जो नॉलेज है फार्मिंग की, वो खत्म होती जा रही है। आप थोड़ा इसके बारे में, ये आपको कैसे इंस्पायर भी करता है पर दुख भी देता है मुझे आपसे बात जस्ट लाइक हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हम खटिया देखते हैं, कॉट, जो कि पहले गांव में हर कोई बनाना जानता था। अभी के टाइम में गांव में खटिया बनाने वाले लोग बहुत कम, इक्का दुक्का लोग मिल जाएंगे, अभी आने वाले समय में वो भी नहीं मिलेंगे। लेकिन खटिया का जिस तरीके से कमर्शियल मतलब बेचा जा रहा है, उसको आप अमेजोन पे देखिए, 5 इंडिया 60,000 की खटिया बेचती है और अमेजोन पे भी 50-25 हजार की खटिया मिलती है। तो हमारे गांव के जो लोग हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी खटिया, तो हमारे पास से वो नॉलेज भी चला गया और हम खटिया वो बना भी नहीं सकते हैं और खरीद भी नहीं सकते हैं। तो कितना डेंजरस है ये नॉलेज, मतलब इंडिजिनियस नॉलेज का जाना हमारे पास से, ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इंडिजिनियस नॉलेज हमको एक सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। आप जिसके पास ये नॉलेज है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब वो अपने आप को आप निर्भर बनाने का बहुत अच्छे तरीका है इंडिजिनियस नॉलेज। Lee, if Umesh just mentioned khatia, and khatias are made out of ropes, and he has been using or learning how to make ropes from his grandmother. In your work also, you weave together these, twine-like ropes from, again, waste material. In a way, your ecological concern is also reflected in this kind of a futuristic possibility, but also taking care of what is near and home, the kind of destruction that's happening right now. If you could tell a little more. Yeah, I was really resonating chota tools ke sath. This idea, I often joke that I am a 3D printer because I'm just slowly using one needle again and again, just making loops, right? I mean, it's a very small task that becomes bigger and bigger over time. So we're slowing down the process while also thinking about the materials to be used, using plastic, specifically waste plastic, and giving it a different life and a different possibility, reinventing the materials that we know so well that are so ubiquitous in all our lives, all our plastic bottles and our ropes and our everything that gets disregarded. So once we reinvent them, and especially through such a small act and gesture of a loop, through small tools, I that was really cool, yeah. Coming to you, Imon, again in connection, and I think we are building connections here between these practices, but we are also through these connections understanding the differences as well in how they approach the work. So Imon, coming to this connection that you have said, that through repetitive movements and layering, you meant not just the fabric, but also broken threads of memory and identity. Could you, through your work and through perhaps some of the examples of your, whether it is your performance or whether it is your paintings that have, you've even compared stitching to painting, right? So if you can tell us a little bit about how you do this repetitive act. Painting for me is a lyric, and the textile works for me is the songs. I see them as both extending with each other like skin. I work with a lot of layers of colors, and now I started to use a lot of textiles too in the painting and papers. So when I started to do the textile, I choose to hand stitch them one by one and not use machines. The main reason was I
use my hands to paint and my brush. So I usually sit on my work and paint. So I am directly physically connected to my painting. And that's how I'm able to create the connection to a more deeper level with my work. So similarly with my textile works, I sit on the work and then I start stitching it like a map. So for me, stitching is like a brush and my hand. So it's the same thing like it was in the painting. And the use of textiles and collages in my work is also connected. It's sort of a repetitive dialogue between the materiality. I see the textiles like colors and hues and oil pastel and oil. So for me, when I work with both these mediums side by side, sometimes it creates me a confusion, but most of the time it's like extending its own body and liver and heart to each other. I think that's a very interesting point of creating confusion, because I see a lot of younger artists in the audience, and as I was speaking with them, and when we, I also realized that there was certain nervousness. But I think it's important that we treat this as a journey rather than having arrived somewhere. So the mistakes and what perhaps we sometimes don't see in portfolios. When we put together portfolios, any practices, we look at the best possible examples. We look at, artist statements which are well written. But there's always that heartache or the, something behind that we edit out. And I'm really interested to hear about the edited out areas, to hear about the problems or the mistakes, as it were. Lee, would you like to talk about this? Yeah, we were chatting earlier as well about how each of us have, these are your stories to tell, but each of us has attempted different mediums in the past, and through a journey of meandering sometimes, arriving at a destination, and now our mediums and our materials feel more are like ourselves. And I feel that way a lot about my own shift into fiber and soft sculpture. It feels like coming home, finally this medium feels the most me, but I could only arrive here through this long journey. Otherwise it wouldn't have meant as much. You did mention that you had studied multimedia, new media arts, and you painted. I've seen your paintings as well, and I've had the opportunity of having worked with you in the past. But you never felt at home as such. I think the fiber arts gave you that sense of belonging. Again, we return back to this idea of coming home. So in your case, coming home is also the idea of finding that space of comfort, perhaps. So would you like to... experimentation, I think. It's the not knowing the end goal and finding it and discovering it on the way. With any new medium, you are like a child, at least for me. I am so curious and excited and ready to fail in all kinds of ways and make mistakes and learn through that process. I think anytime we're discovering something completely different that we're not necessarily comfortable with, but then find that comfort level with it through time and through practice. उमेश, आपसे जब बात हो रही थी, आप ये भी बता रहे थे कि कैसे कोविड के थ्रू और कैसे बाद में भी आप जब वापस घर गए तो आपको समझ आया कि आपके गांव के लोग जो कर रहे हैं या जो वो भी शायद एक how should I put it? थोड़ा इंग्लिश में बोल. Perhaps what you were saying is that these farmers also make mistakes. They are part of a larger cycle, a cycle of
avarice, a cycle of problems, of ecological problems, but also, they are victims, but they are also adding to that problem. If you could talk a little about that. जिस तरीके से मतलब मैंने देखा कि बहुत सारे जो छोटे किसान खास करके मतलब कैसे फार्मिंग छोड़ देते हैं, मतलब वो अभी के टाइम में मतलब खास करके मेरे फादर फार्मर थे और 20 इयर्स पहले हम लोग फार्मिंग करते थे, लेकिन अभी वो कुछ सालों से कुछ दिक्कत हुआ, जमीन कम थी तो नहीं सरवाइव कर पाए और वो हैदराबाद और इस तरह की जगहों पर जाकर छोटे मोटे से जॉब किए, फिर कोविड के बाद वो आए और फिर से फार्मिंग किए। तो ऐसा हुआ कि मतलब वो हम लोग बहुत कम बेनिफिट अर्न कर पाए उससे, कि हमारा घर एक साल चल नहीं सकता है, इतना भी पैसा नहीं हो पाया। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि हमारे पास अभी इंडिजिनियस नॉलेज नहीं है। उस टाइम हम अपना कंपोस्ट बनाते थे, अपना सीड तैयार करते थे और सारी चीजें मतलब जो भी चीजें होती थी हम रस्सी का यूज करते थे। हमारे जो कंपोस्ट बैग होते थे, जो कंपोस्ट बैग भी आते थे, उसके जो फाइबर होते थे उसके रस्सी बनते थे और वो हमारे कैटल बांधने के काम आते थे उस टाइम। तो लेकिन अभी वो कोई नहीं कर पा रहा है, तो इसकी वजह से मतलब ये चीजें अब वो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। और खास करके जो लोग के पास भी बहुत कम जमीनें हैं, छोटी जमीन है, वो खेती में सर्वाइव कर ही नहीं सकते क्योंकि उससे उनको अर्निंग हो नहीं पा रही है। और खास करके मैं देख रहा हूँ कि मतलब जिस तरीके की मतलब खेती में मेहनत होता है, मैं तो खुद बहुत सारे टाइम मतलब खेतों में रहा हूँ। पूरे मतलब खेती का कोई ऐसा टाइम ही नहीं होता है कि आपको इतने बजे से इतने बजे खेती करना है। खेती करने के लिए आपको रात के 2 बजे भी जाना पड़ता है, रात में 3 बजे पूरी रात जग जग के खेतों में पानी भी करना पड़ता है, वो कैसा भी मौसम हो। और इतना सारा करने के बावजूद भी मतलब अगर किसान के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं, हमको कोई बढ़िया बीमारी कोई जबरदस्त बीमारी हो गया, कैंसर जैसी बीमारी हो गया, तो सीधे मरना पड़ता है, इलाज का कोई सोचना ही नहीं पड़ता है, चाहे वो कैंसर किसी भी स्टेज में हो, क्योंकि उतना वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। और तो मतलब या फिर आप कोई क्रॉप का रेट देख लीजिए कि जैसे चावल ही है, किसान के पास से 40 रुपए केजी जाता है, 20 रुपए केजी जाता है। आप मॉल में उसे 100 रुपए केजी खरीदते हैं चावल, लेकिन किसान वो 40 रुपए भी नहीं बेच पाता है। चना हम देखे हैं हमारे गांव में 40 रुपए मिल जाता है अभी भी लगभग, और वो मॉल वगैरह में 100 रुपए में पैकेट मिलता है। तो ये 60 रुपए किसके पास जा रहा है? और ये चीजें मतलब कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वो किसान को मिल ही नहीं रहा है। तो वो चीजें मतलब कहीं ना कहीं खेती छोड़ने का बहुत बड़ा कारण, ये बीच में जो 60 रुपए कौन रख रहा है। तो इस तरह को चीजों को लेकर मैं अपने काम में मतलब ये दिखा मतलब मैं कोई ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं करता हूँ अपने काम के थ्रू किसान की चीजों को, लेकिन मैं एक उजागर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने कुछ एक पोएट्री लिखा था जिसमें लिखा था कि शहर में घास बिकाता तू नोचा तड़ा। मतलब शहर में घास बिक रहा है, हम पहली बार गोवा गए तो देखे वहां पे घास के खेत बिक रहे थे, और तो मतलब घास भी बिकने लगा है और लोग गांव के लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से मतलब घास बिक रहा है, लोग मतलब मिट्टी से मिट्टी लगा रहे हैं, दातुन खोज रहे हैं। तो कविता पूरा जैसे मैं थोड़ा सुना दे रहा हूँ कि शहर में घास बिकाता तू नोचा तड़ा, सफे बथुआ कर्मी खाता तू सोचा तड़ा, लोगवा माटी से नहाता देखा दतुअन वहां जो हाथा, शहर में घास बिकाता तू नोचा तड़ा, सफे बथुआ कर्मी खाता तू सोचा तड़ा, सबके छत पे वहां रुपाता सफे उसी ने वहां खाता। मतलब सब लोग छत पे फार्मिंग करने लगे, अपने टेरेस पे फार्मिंग कर रहे हैं, और सब लोग बॉयल राइस खा रहे हैं जो कि लोग छोड़ चुके हैं। हमारे यहाँ बॉयल राइस मतलब अभी लोग नहीं खा रहे हैं, इतना ज्यादा बॉयल राइस होता था कि मतलब अभी कोई नहीं खाता था। और शहर में भी लोग बॉयल राइस महंगा खरीदते हैं, काफी वो कॉस्टली होता है। तो वो सब चीजें मतलब कैसे जो ये उपला है, गोईठा हम लोग बोलते हैं, वो ऑनलाइन में बिक रहा है, जो गोबर के कंडे होते हैं। तो इन सब चीजों को हम देख रहे हैं कि कैसे मतलब चीजें खत्म हो रही हैं। इतनी सारी जो बॉयल राइस बनाने का प्रोसेस होता था, कितने अच्छे मिट्टी के चूल्हे बनते थे, या फिर राइस प्रिजर्व करने के जो कंटेनर बनते थे हमारे यहाँ, वो मेरी माँ बहुत 8-8 फुट बड़ी कंटेनर बनाती थी और 20 साल पुराना चावल हम लोग खाते थे उसमें। तो सारी चीजें कैसे मतलब एकाएक मतलब कुछ सालों में मतलब खत्म हो गया। तो हमारे बचपन से देखते देखते अभी तक में तो बहुत ही मतलब अंदर से वो करता है काम करने में। Of course, these are extremely important and valid questions that Umesh raises with his practice, and something that many of us who might be sitting here are familiar with because somebody from our family or an earlier generation, or somebody
right now whose family members are going through this process. So I think it's a very important voice. And similarly, it's a voice from the margins. It's not something that we are all here celebrating art, but it's also a reality that exists alongside all of this. Lee, in your work, it's not about direct protest, but imagining what alternative futures can be and how this can also be a powerful act of resistance, just as Umesh's act of resistance is in a different way. You also have been resisting certain things like identity and gender and fluidity. Could you tell us a little bit about how you find your voice through your practice? Another little moment of silver lining that I'm also seeing here is that we're all engaged in these radical acts of slowing down, which is super interesting. But going back to how identity and my work weaves together, I think at the end of the day, it's not necessarily about creating a queer narrative, but allowing queerness to seep through into the work. It's not that I'm going out into, I don't work figuratively, so there's space to allow that fluidity to happen within everything, because there's other acts of surrealism. We're thinking about the future and imagination and ecology intertwined. And Imon, coming to you, so your art, you've discussed, explores this interconnectedness between the human and the non-human. And, do you think this kind of a positioning can help people to rethink their place in the world? Yeah, I think it's very important that to feel more alive than to be associated with any particular gender or any. I think I believe more about being present as a being, as a soul. And that's what I observe around me is tiny things like an insect or a grasshopper or a crow, for example. So that happened at a period of time when I was completely detached from everything after my father's death. And I sort of started to observe these things that have nothing in them. They're so tiny in this entire universe that the existence itself is with them as we see them as an insect or a crow. Whenever I see a crow, I never see any female, male or anything. I see them as a soul. I see them as a bird with feathers who stays in the nest with their kids, and that sort of thing, it emerged in my work in the forms that I make that are not representing anything, but there's something that are lifeless, but I'm trying to give life to it by making it into art. So we are at the last 5 minutes, and I think we've covered a lot of interesting ground, and I would like to ask all three of you, if the audience who's been here listening to your concerns, and I would like to ask each of you, what's something you're currently questioning in your own practice? And if the audience walks away with this conversation, what is the one thing that you would want them to walk away with? For me, I would say I want people to feel what they feel. I don't want them to think like they're pressured by the society, or if they have wild thoughts, or like me, I accepted myself that I am from the wild and
after life, we all return to the wild, we return to the nature. And I think I want people to take that part of themselves that are them and the presence that they have inside them as a human. So I think, yeah, that's what I want people to take them from my works. What are your plans for the near future, if any? For me, I don't know. Right now, I think I'm completely flustered over a couple of years now, been working, and I don't have any particular plan right now, but yeah, going back to my old paintings and see what I have changed now. Yeah. That's always, the past is always a great place to think about the future. Lee? For the near future, I hope to get some rest after creating rest spaces for others, and that rest hopefully can lead into larger installations and larger work, as I'm always trying to go bigger. And in terms of what to walk away with, this whole opportunity and the installation in itself and everything would not be possible without community. I think as a young artist, I feel sometimes so siloed away and, disconnected in some way. But being here and being able to create something here is only possible because of India Art Fair's support, the volunteers that make the world go around for us, our friends, our family. So reminding myself and any young artists out here that community is how we grow and move forward. So, thank you. Umesh? मैं खास करके अपने एक आवाज मतलब काम के थ्रू ऐसा चाहता हूँ कि जैसे हम अपने काम मतलब हमारे काम को भी कोई क्रिटिसाइज करे या फिर हम जो भी कोई आवाज उठा रहा है उसके आवाज उठाने का मतलब हक होना चाहिए, मतलब चाहे वो देश में हो या आर्टिस्ट कम्युनिटी में हो, कोई भी अपना बात कहना चाह रहा है उसे ये चीज मिलना चाहिए। इस तरह की चीजें मतलब अगर नहीं होंगी तो हम लोग पीछे जाएंगे कि अगर हमको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा या हमको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है और हम उसको मतलब उसके बदला निकाल ले रहे हैं उसके बदले में, कि तो ये चीजें मतलब ना हो। खास करके मतलब अभी मुझे कुछ ऐसा फील भी होता है कि कुछ ऐसा हम काम बना रहे हैं तो जैसे अंदर से लगता है ना कि ये काम लगता है कि मतलब हर जगह डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, ऐसी भी चीजें मतलब ये चीजें होती हैं और मुझे ऐसा लग रहा हो रहा है ऐसा। तो ये चीजें खास करके ना हो, ये चीज हमारे मतलब देश के लिए, हमारे आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए, सबके लिए खतरनाक है, समाज के लिए ये चीजें। और मैं अपने आगे के प्लान के लिए मैं अभी बहुत काम करना चाहता हूँ और मेरे अंदर अभी वो है, एक्साइटेड हूँ मैं अपने नए काम करने के लिए। मैं अपने मटेरियल बहुत सालों से मतलब मैं पिछले 5 सालों से मैं मटेरियल रख देता हूँ और धीरे धीरे उसको मुझे जब मटेरियल इंटरेस्टिंग लगता है तो अभी रख दिया, 5 साल बाद भी उससे काम करूंगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, मेरी गाँव में एक छोटी नदी है, वो नाहर से निकलती है और एक मतलब गंगा में जाके मिल जाती है, लेकिन वो नदी गर्मी के बाद भी मतलब गर्मी आता है तो नाहर सूख जाता है लेकिन नदी चलती रहती है, वो उसमें पानिया थोड़ा ही रहेगा लेकिन रहेगा क्योंकि उसने अपना सोर्स बना रखा है। धीरे धीरे जैसे पसीना हमारे बॉडी से निकलता है वैसे वो नदी के से कुछ ऐसा है जो कि वो हमेशा चालू रहती है। तो उसमें बहुत सारे स्टोन है, वो मैं बहुत टाइम से उसका स्टोन कलेक्ट करता हूँ और स्टोन कलेक्ट करके मैं बनारस आया तो मैं बनारस में देखा कि वो इस तरह का सेम स्टोन है। तो वो मैंने पता किया वहाँ के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में, तो पता चला उन्होंने बताया कि ये ज्यादा जब माइनिंग लैंड का होता है तब ये वाटर बॉडी में सोडियम क्लोराइड से ये स्टोन बनते हैं। तो मतलब किस तरीके का रिलेशन बन रहा है मतलब दोनों जगह में कि कैसे वो स्टोन और हम अपने काम में उसको किस तरीके से यूज करेंगे, अब मैं इस तरह के आगे प्लान कर रहे हैं। So some very interesting thoughts coming to the close of the talk. One is, of course, reminds me of Tagore, where the mind is without fear. I think that's what all of these artists also want to say, and that it takes a village. And India Art Fair, thanks to India Art Fair, who's giving them this platform to not only create but speak without fear. And they're also providing this whole community of village to come together to support. So I think as these artists are part of the Artist in Residence program,
which has now been running for several years. It is such a huge support system to maybe alternative practices or voices from the margins. So I think shout out to India Art Fair and for creating a safe space. So I would now like to open it out to the audience. 1 or 2 questions, if anybody has any observations or questions. And questions, not comments, not thoughts, questions only. इंडिया की जो आर्ट है वो बहुत क्रिएटिविटी है इसके अंदर, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आइडियाज और आर्टिस्ट और कंसेप्ट और सेलिंग मतलब सब चारों का कॉम्बिनेशन बनके कुछ आर्ट को प्रमोट किया जाए। मुझे तो लगता है कि इंडिया आर्ट फेयर ऐसा प्लेटफॉर्म है और अलग अलग ऐसे कई आर्ट फेयर्स और बियनालेस भी होते हैं, तो आर्ट वीक्स भी होते हैं। इसके अलावा आई थिंक आजकल आर्टिस्ट की खुद की बहुत आवाज़ बुलंद होने लग गई है चारों तरफ, चाहे वो यंग आर्टिस्ट हो या सीनियर आर्टिस्ट, ऐसे बहुत ही हैं जो कम्युनिटी बेस्ड काम कर रहे हैं। ऐसे इंडिया में बहुत सारे कोलैबोरेशंस और कोलैबोरेटिव ग्रुप्स भी हैं। आई एम श्योर यहाँ पे बहुत आर्टिस्ट हैं जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आप कहाँ जाकर और कैसे बात कर सकें। मैं शायरी लिखता हूँ बहुत डीप वर्डिंग में, मैं चाहता हूँ, मेरा आर्ट में हाथ अच्छा नहीं है, तो एक आर्टिस्ट और मेरी शायरी है उस पर थीम पे पेंटिंग बन के एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, ये मेरा आइडिया है। आई एम श्योर ऐसा आपको, आप ढूंढेंगे तो ऐसे आर्टिस्ट बहुत मिलेंगे आपको जो कोलैबोरेट करना चाहेंगे। Next question. Thank you. Next question. Right at the end, that person, and then we're done. Hey, good afternoon, everybody. My question is like that, like AI is overcoming everything. So this is a fear now in everybody and every artist. Like, how can we overcome this? Like, no matter what the prompt we give to AI, it makes everything like a good art, a good photograph, a good sculpture. So is there a stand in future for artists, or we are going to like going blurred in future? So my question is that. Okay, I'll set the stage for the answer, then I'll ask the artist to answer. यहाँ पे 3 practices ऐसी हैं, 3 practices here which are in a way slowing down. Just as I think we've seen a movement towards slow food, slow fashion. I think there's a realization that while AI cannot be denied, while it cannot go away because we don't want a lot of things to. AI cannot carve a sculpture like me, so. So this is not a conversation. I just want them to answer your question. I'm so sorry. Yeah. I mean, again, AI can't crochet either. All of our practices are literally the opposite of AI. So if we're standing on this stage today, that means that AI is not taking over the art world anytime soon, honey. So I request you to give the mic back to my colleague. And Imon, if you have anything else to add. Yeah, I mean, AI is something which is, I think, is very dangerous. It's a dangerous virus. And as an artist, I feel you should be more physically present with your work than, clinging in the ideas of AI and AI generated. And yeah, I would say AI, as you said, Lee, is not yet on this stage. That's the reason we are here right now. So yeah, I would like to say that. Thank you very much. Thank you so much for that. Thank you.